Loss, that shocking loss to England. Revenge was sweet as Bharat beat England by 68 runs to storm into the final where South Africa wait for them. Ladies and gentlemen, mark the time and date. It is the 29th of June at 8 p.m. India time that the match gets underway at the Kensington Oval at Bridgetown, Barbados. Vimal Kumar is on ground and gets us a preview. The Indian team has just landed in Barbados, and although there is no practice session on the eve of the final, which is usually the case, but the schedule has been very hectic and it has been a big disappointment for a lot of fans who have been coming from all parts of the world. They have been backing Team India, especially from USA, Canada and UK. And you know, the facilities in Caribbean, especially with the flights, are not great. So there has been a bit of trouble on that front. But yes, what has not been disappointing is the brand of cricket Indian team has played so far, especially Rohit Sharma. He has walked the talk. Rohit Sharma was the captain when India lost the semi-final against England in Adelaide, and they were accused of playing conservative cricket. But over the last 2 years, and I have seen this team very closely because I have been on all the tours where this team has toured. I have seen the bonding, the mission, the way they have, you know, jailed together as a team. And this is quite refreshing, and I think this will be only appropriate if India wins the trophy under the leadership of Rohit Sharma. Because if you look at the combination of Rohit Sharma and Rahul Dravid, the great Rahul Dravid, the way they have accommodated each and everyone, they have got the best out of Virat Kohli, they have got best out of the youngster. So this is the culmination of some fantastic work over the last 2 years. But I think that there is an underlying theme of Badla, the revenge. Australians obviously were out from the tournament. Rohit Sharma said that it's refreshing to see that Australians are no longer in this tournament. England's the revenge has been taken in a most brutal way. The margin of defeat tells the kind of domination India had over England. And then obviously there is no revenge theme in the against South Africa. But I think Rahul Dravid must be thinking, and team must be thinking, that this is the time for the redemption for the coach, because Rahul Dravid, former India captain, he came in West Indies in 2007 ODI World Cup. The team was full of superstars like Tendulkar, Ganguly, Virendra Sehwag, Gautam Gambhir, and so many stars. Yet that team failed to go to the next round. They were out of the tournament. But now this is the time to set the record straight. This is the final game of the Rahul Dravid, the head coach. He will say goodbye. And what will be more memorable than gifting the coach memorable T20 World Cup trophy? There are so many stories to talk about, ladies and gentlemen. 3 players who are coming back from career-threatening injuries and they would want to lift that trophy. Rishabh Pant, Hardik Pandya, and of course Jasprit Bumrah. Rohit Sharma himself took India into the World Cup, World Test Championship final, lost there. Took India into the ODI World Cup finals, lost there. Now it's the T20 World Cup. So will this jinx be broken? And that too against a team which have now got that chokers brand stuck to them. The ghosts of the past refuse to leave them. The South Africans since 1992, they've been just branded chokers. 2 generations of cricketers have passed. They have not been able to shed this. Will they be able to do that? That's another aspect. What are the fans thinking, especially closer home, who are going to be watching it on their TV sets or perhaps in the cinema theatres or at pubs and restaurants all over, collecting in a group? Let's see what Chennai thinks. A lot of excitement in the air as India is all set to face South Africa tomorrow. You know, what are your expectations? You've been seeing all the games. So what are the challenges for Team India? The challenges of Team India is the last time that, you know, we lost the 50-over World Cup to Australia. That keeps haunting. That is one of the things which is there. And also, as far as the T20 World Cup is concerned, India has only won one. That is the inaugural tournament back in 2007. And in 2014, we were a finalist. So after that, we have not reached up to the final stage. So final stage, we have crossed the first hurdle of winning the semi-final and coming all the way to the finals. So it's going to be an exciting contest. Even though we talk about all these challenges, my prediction is India as a winner. But as you know, on the flip side, South Africa have never reached the final. This is going to be their first final. The competition is going to be heavy and really looking forward to it.
As far as Rohit Sharma's captaincy is concerned, do you think this time he's going to prove himself? Definitely. All the while I've been noticing the way he's captained and the way he's been playing selflessly. So it's really amazing. Little hopes on Virat Kohli as well, so that he comes and delivers in that final match as well. Big hopes on India. Hopefully we win it. What about you? Are you confident India is going to win tomorrow? This would be India's golden generation for cricket, isn't it? There were the Sachin Tendulkars and Rahul Dravids in the past, but with Rohit Sharma at the helm this time around, you have a lot of talent in that squad. And even though this is South Africa's first final, I don't think our boys in blue are going to let them off that easy. And joining us now is a former chairman of selectors, former India keeper, and someone who's watched these players at very, very close quarters and has got a very, very acute sense of the game and reading of the game. Kiran More ji, namaste. Always a pleasure speaking with you. 2 World Cup हार गए, टेस्ट में, ODI में, तीसरी बार क्या विक्ट्री पार for Rohit Sharma? It looks solid, I think जो लग रही है जो टीम, और पिछले साल भी जो हम वनडे भी खेले, टीम तो टॉप थी हमारी, यही टीम थी, इसमें 1-2 चेंजेस थे. तो बिल्कुल मुझे लगा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हम लोग अहमदाबाद में ऐसा मौका नहीं मिलता. जो होम पे जो वर्ल्ड कप जितना अलग सा मजा होता है, वो हमने 87 में मिस्ड आउट. वी लॉस्ट इन फाइनल्स इन 87, बट पूरा मौका था अहमदाबाद में, और अभी फिर मौका है. मौका बन गया है अपना जो बिल्कुल. तो वो मौका है. आई थिंक द गुड टीम, एंड आई थिंक यू लॉट ऑफ क्रेडिट टू the support staff, Rahul Dravid especially, the way he has taken care of the team. I give a lot of credit to him, because it's not easy. It's not इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दिखता है सब कुछ, सब प्लेयर अच्छे दिखते हैं, सब कुछ. But I think there is a people behind the team. I think they should get credit. Even the selector should get credit. And that's what I believe. That एक group होता है, एक team होता है. It's like a family basically. And Rahul has been really a strong person, who's taking the whole team. There are some small margin. जो controversies होती है उसकी वजह से, but Rahul has been such a low profile and does a lot of work behind the scene. But overall, Kiranji, has this World Cup been a little lackluster? Pitches in the USA, a lot of criticism about Nassau County and some of the other areas. Then a lot of the top teams falling by the wayside. How do you see it? Overall, as you look at it, I think वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप का आवाज आना चाहिए, एक आवाज गूंजती है, वो आवाज गूंज नहीं रही है. आई थिंक आई एम बिट डिसअपॉइंटेड एक्चुअली. आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया इज इन फाइनल्स. बट अब जो वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इंडिया को जो क्रेडिट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज़ दे आर प्लेड ऑन टफ पिचेस, यू गो थ्रू द मैचेस, तो वो लोग जो टफ सिचुएशन से आए, आई थिंक दे हैव परफॉर्म वेरी वेल. इवन फर्स्ट मैच पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता था, but they came back. I think that shows the character of the team. उस दिन से मुझे पता चल गया कि we have a very good chance, क्योंकि ऐसा कमबैक करके मैच जितना कोई चैंपियन टीम ही कर सकती है, तो वो दिखा दिया उस दिन हमने कि क्या कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट यू से ICC की तरफ से. I think way they handle the things overall. When you look at the ground, there are hardly any covers on the pitch. So एक थोड़ा सा बीच में से एक पैच डाल देते हैं और आप ग्राउंड कवर कर देते हैं. आपको मालूम है इतना बड़ा इवेंट है. So I think overall, I think what feedback I'm getting, even the journalists are facing a lot of problems. The crowd is facing problems, not getting flight, they're not getting tickets there to go there. How to travel to West Indies. I feel very simple, bad for the West Indies, because West Indies got a great cricket culture. Yeah, it's great fun. तो आप कैसे organize करते हो उस पे depend करता है. वो ICC, I think they should have taken more initiative. They should learn from BCCI how to handle it. Yes, BCCI certainly have mastered that, in terms of that template to organize on the big stage and also big event. That true credit to them there. But जैसा आप कह रहे हो कि India's played on some very tough pitches, but many believe कि India's got a very unfair advantage. Sanjay Manjrekar believes that. Michael Vaughan तो बहुत कुछ कह रहे हैं, but point is he's talked about that had England got a turning track, they would have won. Because India knew the venue already, because it was going to be in Guyana, so they won. Harbhajan Singh ने घुमा के दिया भी है, in the sense दूसरा बेका at Michael Vaughan, he's been trolled also. But a lot of talk about the fact कि India brings in the money. This is the biggest market. Sponsors को खुश रखने के लिए India is playing all day games in the West Indies, and they already knew the semi-final venue, so they had this unfair advantage all along.
they're being treated with some special VVIP treatment. You agree? Disagree? Kiranji, can you hear me? Do you agree? Disagree? नहीं, ऐसे बात नहीं है एक्चुअली. आई डोंट थिंक सो. इट्स देयर. आई थिंक पीपल हैव गॉट देयर ओन ओपिनियन. कभी किसी को नंबर्स ज्यादा लेने के लिए भी बात करते लोग, तो आई डोंट केयर अबाउट इट. बट वे इंडिया प्लेड क्रिकेट, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. दे हैव प्लेड, यू नो, सबके लिए कंडीशन सेम थी. इट्स नॉट ओनली इंडियन टीम, इट्स फॉर एवरी टीम. यू नो, वेस्ट इंडीज लॉस्ट एट होम. सो आई थिंक ऐसे नहीं कि आप कुछ एडवांटेज था इंडियन टीम. इंडियन प्लेड व्हेन यू लुक एट द overwise. I think where we are done well, where we are lacked, you know, I think वो दिखता है अपने टीम में. I think overall the whole team has done very well, and especially I always believe that when you are good bowling attack ना, आपका मैच जीतने का चांसेस ज्यादा होता है. देखो पाकिस्तान के मैच में हमने रन नहीं बनाए. हमने पहले 2 मैचेस में रन नहीं बनाए थे. करेक्ट. और किसने जिताया? गेंदबाजों ने. गेंदबाजों ने 150 लग जाते हैं बोर्ड पे, तो आई थिंक देयर आर गुड चांसेस ऑफ विनिंग द मैच. तो आई थिंक वो कौन करता है? तो गेंदबाज. तो मैंने लुक एट द बॉलर्स हु हैव टेकन विकेट्स. काफी टॉप बॉलर्स से हमारे जो उन्होंने विकेट लिया है. आई थिंक अक्षर पटेल आते हैं, जडेजा ने अभी तो कंटिन्यू शुरू नहीं किया है. उसके बाद कुलदीप है, बुमराह है, हार्दिक है, यू नो, सब ने गेंदबाजी इतनी अच्छी कर दी. तो आई थिंक मुझे लगता है अर्शदीप है. आई थिंक एवरीबॉडी हैज बोल्ड सो वेल. सो बैटिंग में हुआ है, आई थिंक रोहित हैज टेकन द लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू नो, देन आखिर में आके हार्दिक ने फिनिश किया है. तो आई थिंक मुझे लगता है सूर्या, रोहित, एवरीवन, यू नो, ऋषभ, एवरीबॉडी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल. मुझे लगता है टीम का बैलेंस से दिखता, पता चल जाता है कि अच्छी टीम है और बढ़िया काम किया सेलेक्टर्स और कोच ने मिलके. ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके गए, वो दोनों ऑलराउंडर्स, यू नो, करेक्ट. दे कैन प्ले इन एनी सिचुएशंस, यू नो. अक्षर पटेल ने आईपीएल में नंबर 3 बैटिंग किया, 4 नंबर बैटिंग किया उन्होंने. फिर उसने यहाँ पर आके पीछे बैटिंग करते हैं. तो आई थिंक जब आईपीएल में आप कर सकते हो, इंडिया के लिए कर सकते हो, तो यहाँ पर आके आपने जो नीचे आके बल्लेबाजी करते हो, जडेजा है एंड अक्षर पटेल है. तो आई थिंक एंड हार्दिक has played a very important role for Indian team. When you look at the first matches, I think Hardik was a key player. Yes. Who has taken the Indian team to very good totals and he has bowled well. So I think ऐसे players जो आपके पास होते हैं, 3 ऑलराउंडर्स जो आपके पास है, यहाँ पे हार्दिक, अक्षर एंड जडेजा. So I think थोड़ा कैप्टन को भी अच्छा लगता है, मैं इधर भी भला घुमा सकता हूँ, सूर्या भी खेल सकता है. Virat has not scored, but I hope he gets a big one in finals, and he's a big player, you know, for me. So बिल्कुल टीम बढ़िया टीम है. तो जो आप जो बात किया, आई थिंक मुझे लगता है जो बात करने वाले बात करते रहेंगे. देखो पहले भी पहले भी वर्ल्ड कप हुआ है वेस्ट इंडीज में, तभी भी इंडिया हैड लॉस्ट, यू नो, 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद है. So that time nobody said anything. That time also we struggled on the pitches. Correct. So I think ये सिर्फ बात बोलने की बात है, but on struggle difficult pitches to perform well and to win it, I think hats off to the Indian team. Let's talk about Rohit Sharma's approach at the top, Kiran More. From November onwards, last year, or 22 onwards, he has decided to change his approach. He goes hammer and tongs, and he's like, you know, somewhere it's the entire Baz attitude. But let me ask you, do you agree with that kind of a style? Do you believe that what he's done is actually working? बिल्कुल. देखो आप T20 फॉर्मेट में आपका ये टॉप प्लेयर होता है जो जाके बैंग बैंग करता है बल्लेबाजी. तो आई थिंक ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. ही स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट. तो उसको मालूम है कैसा गेंदबाज को लूटना. तो वो एक बार शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं है. फिर देन ही प्लेज अ बिगिनिंग, यू नो. देन 92 he got, 94 he got. It was unbelievable, you know. I think what a knock he played. So that was a crucial, that impact. तो जो पहले जो इम्पैक्ट होता है, रोहित शर्मा एक बार शुरू होता है ना, सब लोग डर जाते हैं. करेक्ट. आई थिंक वही हुआ. Because I was worried about Rohit, Virat, you know, how they're going to start off, you know, because there's going to be a pressure, you know, on Rohit also and Virat also, because it's not easy. People had spoken a lot about it in India. Right. But मुझे लगा इसमें से दोनों में से एक भी चलेगा ना, तो बिल्कुल इंडियन टीम चलेगी, क्योंकि एक का चलना बहुत जरूरत है. पहले में आप विकेट 2 खो देते हो, फिर उसके बाद दबाव हो जाएगा ऋषभ और सूर्या पे. और जैसे बल्लेबाज है सारे, तो देखो आप विराट एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है, who can carry the inning. आपके पास रोहित है, who takes charge, you know, and he's a player who shows aggression, plays fearless cricket. So I think वो है. Then Rishabh Pant again, that move was fantastic by Rohit and Rahul, you know. I think getting ऋषभ पंत नंबर 3, हम लोग तो यहाँ पे सब लोग काफी लोग बोल रहे थे ये नंबर 3 जाएगा वो, पर ऋषभ पंत का I think he has played a trump card, you know, is playing at batting at number 3.
and then Surya coming in, so left hand बीच में आ गया, और बाद में सूर्या आता है, सारे राइट हैंडर आ जाते, हमको भी दिक्कत आ जाती थी. तो आई थिंक जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, आई थिंक रोहित ने शुरुआत में, सूर्या इज कमिंग अप एंड देन हार्दिक, सो आई थिंक ये जो इम्पैक्ट से बल्लेबाजी हुई है, तो आई थिंक जो बैलेंस हमको मिला. तो शुरुआत कैसी करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैच वाज फॉर पाकिस्तान, सो देयर वी गेट मोमेंटम. और पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद एक अलग सा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है. उसके पहले आप इंडियन टीम का बॉडी लैंग्वेज देखो, दे वर इन द शेल, इवन दे बैटेड फर्स्ट, दे स्ट्रगल्ड, in the batting, and you look at the body language, and then suddenly they were 80 for 2, 70, 80 for 2, and then suddenly got wickets. And when we won the match, and after that we were sailing, we knew that we were going to win all matches, because एक मोमेंटम मिलना चाहिए वर्ल्ड कप में, बहुत जरूरत होती है कोई भी टीम को. इट्स नॉट इंडियन टीम, एनी टीम इन एनी स्पोर्ट्स, सो आई थिंक वो मोमेंटम मिलने के बाद मुझे लगता है रोहित हैंडल इट वेरी वेल. एंड मैं कहता हूँ बीच में अक्षर पटेल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. Kuldeep getting into in West Indies, that was a great move, because initially आप देखो फास्ट बॉलर्स के लिए सिराज खेला, हर्षदीप खेला, और उसके बाद कुलदीप को राइट वक्त पर लेके आए, जल्दी एक्सपोज भी नहीं किया, क्या जल्दी चलो कुलदीप हमारे पास है तो उसको लेके आए. तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव था, और स्ट्रेटेजिकली आई थिंक 100% मार्क्स टू राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा. लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा. कल मैच के बाद थोड़ा इमोशनल लगे जब वो बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, एंड विराट कोहली केम इन, गिव हिम अ पैट. इट्स अ बिग मोमेंट फॉर हिम. 2 फाइनल उनके अंडर हार चुके हैं, टेस्ट एंड ओडीआई. I'm keeping my finger crossed, and he wins this because he deserves it, Yes, इतना मेहनत करने के बाद आप वर्ल्ड कप फाइनल में जाते हो, तीसरी फाइनल में जा रहे हो, तो आई थिंक he deserves it more, and I hope that God is with him and with the whole Indian team, because बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे. It's not that आसान होता है, इतना आसान नहीं होता है ये पूरा मोमेंटम बिल्ड करने के लिए. आप एक वर्ल्ड कप हारने के बाद आप थोड़े डिजेक्ट हो जाते हो, लाइक यू गेट, कि कैसा रहेगा नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट मैच भी कैसा खेलना है, क्योंकि आप फाइनल हार के आए, उसके बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता है. आई थिंक दैट्स व्हाई दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक, आई कैन से दैट, फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे, उसके बाद वर्ल्ड कप हारे, और ये कमबैक करना ना. आई होप द इंडियन टीम विंस एंड शो द वर्ल्ड दैट वी आर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड. सो आई थिंक मुझे लगता है वेरी गुड चांसेस, आई गिव यू like outside chance to South Africa, just 20%. But both teams are undefeated, and still you are saying it's going to be 80-20. Why? Because when you look at the balance of the team, so I think मुझे लगता है we have better balance. Okay. Because when you look at the man-to-man, I think they have fast bowlers. They have 3 fast bowlers. They have 2 good leg spinners also, Maharaj and Shams. तो वो भी है उनके पास. So when you compare, हमारा कुलदीप भी है, अक्षर भी है, जडेजा भी है, वहाँ पर हार्दिक है, बुमराह है, and हर्षदीप है. And this is going to be an interesting contest. I'm saying 80-20, but still it's going to be a very interesting contest. And in this match, the key for me is going to be Jasprit Bumrah. So if Jasprit Bumrah को थोड़ी रन जाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ी दिक्कतें आएगी. So Jasprit Bumrah is going to be key factor in this final match. But talk a little on Jasprit Bumrah, Rishabh Pant, 2 players with career-threatening injuries who seem to be nowhere in the radar over at least 2.5 to 3 years of cricket. चला जाएगा सब ये speculations थे, and look how they've come back in less than 24 months. I want to add one more person. Name is Hardik. Hardik is also I was just about to say that. Yes, he's that come back back. fracture. Yeah. He won title for Gujarat Titans and was in the finals and doing very well. He became India T20 captain. So I think ये तीनों I give them, because see खेलना सब कुछ है, पर जब आप especially fast bowlers हो, all round Hardik also bowls 140-45. Yeah. So I think Bumrah. इनको वापसी करना, I think I give a lot of credit to the BCCI at National Cricket Academy, the doctors behind them, physios, trainers. एक बंदे के पीछे 3-4, 5 लोग होते हैं, वहाँ पे डायटिशियन होता है, आपके पास फिजियो होता है, 2 फिजियो होते हैं, 2 मैस्योर्स होते हैं, 2 ट्रेनर्स होते हैं. They are taking care of you. They take care of you at National Cricket Academy. So I think a process है, प्रोसेस से वापस उनको लाके बॉलिंग कराना, धीरे धीरे उनको बिल्ड करना. तो आई थिंक यू लॉट ऑफ क्रेडिट टू द नेशनल क्रिकेट. नोबडी टॉक्स अबाउट नेशनल क्रिकेट अकेडमी. सो आई थिंक उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ. और बिल्कुल पर्सनली ऋषभ, it's a great story. Somebody should write a beautiful book on Rishabh Pant, make a movie or a book. It's going to be a great story for the young generation. Correct. How to make a comeback. Definitely God has given him a second life, So I think ये story रुक नहीं सकती है. It is unbelievable, and for him also, and I met him.
You did? Okay. उसमें एक ही लाइन सर भगवान ने दूसरी लाइन मुझे दी. You know, I'm going to enjoy it, and he's enjoying it. That's the best part of it. Earlier, when you see Rishabh Pant used to get into under pressure, थोड़ा सा ये हो जाता था. But now he said, I'm going to enjoy it, and that's what he's going to do. And he has worked very hard. Really hard, yeah. You know, ऐसा comeback करना इतना आसान नहीं है. So I think वो है, वो हार्दिक भी, you know, Hardik has come back, you know, all this after the whatever happened in IPL and way he's come back in the World Cup and shows the character of the person, you know, as a cricketer. So that shows his body language, what he's doing on the field. Yesterday also he got a cameo, 23 runs, coming and whacking 2 sixes. Yes. Was unbelievable. And see the body language of everyone, Bumrah, Hardik and Rishabh Pant. So I think ये trio नहीं होते ना, तो ये team अलग होती है. You know, तो बिल्कुल ये बहुत important players है इंडिया के. और जसप्रीत बुमराह तो hats off. When you look at the Indian cricket history, you talk about Kapil Dev, Jasprit Bumrah, whom the तीसरा है तो अपना श्रीनाथ. So we third fast bowler, we can talk about it. कि इंडिया में ऐसा रेयर होता है फास्ट बॉलर. तो अभी काफी आ गए, जहीर खान हो गए, उन्होंने भी 300 विकेट लिया है, मोहम्मद शमी है. So we have good lot, you know. So I think lot तो बहुत बढ़िया है, पर Jasprit Bumrah has been unbelievable. It's like talking about 3 format coming and doing well and match winner. So अब देखो ये वर्ल्ड कप में कितने मैन ऑफ द मैच मिले उसको. So I think he's a key. Yesterday also he started off and taking first wicket is very important. Last भी उन्होंने लिया. पावर प्ले में आप 3 विकेट लेते हो तो मैच वहीं खत्म हो जाती है. मैंने तो मैच देखी भी नहीं, मैंने 6 ओवर मैच देखी और मैंने बोला ये तो मैच खत्म हो गई. तो बस बंद करके उसके सुबह उठ के हाइलाइट्स देख ली मैंने. I think hats off to Indian team and hats off to Rahul Dravid. But final जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? It's the Kensington Oval, Bridgetown, Barbados. What will they have to do? I think bat well. That's it. Simple. If runs on the board, 170 on the board, we'll win this match. But if they have to bat well, put big scores, then you know somebody who's always performed on the big stage for India, उसका बल्ला अभी तक चला नहीं है. You said he will come good in the final. Virat Kohli, your thoughts? I think he's going too hard on the ball. That's what I feel. So देखो इतना बड़ा प्लेयर है, इसके बड़े प्लेयर की बात करने की, बैटिंग की बात करते मैं actually who I am to talk about his batting. But when you talk about the mentally and थोड़े से कभी-कभी आप गलतियां कर जाते हो. He's too going too hard on the ball. He's trying to prove himself. He doesn't need to prove. Virat is the legend. You know, he's the greatest. You know. So I think आप तेंदुलकर की बात करते हैं, गावस्कर की बात करते हो, तो I think विराट कोहली का भी नाम आएगा ही आएगा. विराट कोहली आएगा बिल्कुल सब लोग को खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो इसने बहुत दिया इंडियन क्रिकेट को. Yes. You know, और देते आ रहा है, अभी भी दे रहा है. Still contributing. I think he has failed, I know, but he'll come back. You know, he's a quality player. और उनको देखने मजा आता है. लाइक जो 0 करते तो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड पे कितनी 100%. दैट इज विराट कोहली. यू कैन नॉट चेंज विराट कोहली, और विराट कोहली वैसे ही रहना चाहिए. आई थिंक आप रन भी नहीं बनाए, ट्रॉफी जीत के आओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फॉर मी. आई थिंक बट विराट के लिए आई थिंक काफी लोग बोलते बातें करते, पर आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, यू नो. अब 80-100 करने के बाद आपको कौन कहेगा आप बल्लेबाज नहीं हो. आई थिंक देखो हर he doesn't need to prove anything to anybody anymore, right? Very rightly. किसी का फेलियर आने वाला है कहीं नहीं कहीं. Correct. So I think थोड़ा सा फेलियर आया है, पर मुझे लगता है फाइनल में कुछ अलग सा दिखेगा. Well, fingers crossed on that too. Final question, Kiran ji. We got paucity of time, but let me quickly ask you. एक तरफ चोकर्स हैं, दूसरी तरफ जिंक्स. ट्रॉफी कौन ले जाएगा? नहीं देखो, they are going to come hard on it. उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है और एक अच्छी यूनिट है, और उनके बॉलिंग अटैक उनका बैलेंस बढ़िया है. करेक्ट. आई थिंक उनके बल्लेबाज कोई चल गए, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी डिकॉक है, टॉप प्लेयर्स है उनके, क्लासन है, मिलर है, उनके कप्तान है माकरम है. तो आई थिंक उनके माकरम भी 2 स्कोर डाल देते हैं. सो इट्स नॉट दैट उनके पास टीम नहीं, उनकी टीम अच्छी है, बेहतरीन फील्डिंग टीम है. Only thing, if they score runs on the board, they are going to come very, very hard on it. You know, so I think it's not going to be easy. Correct. So इतना आसान नहीं है. They have quality fast bowling attack. Nokia, Rabada, you know, Jansen, you know, then Maharaj and such. You know, so the 5 bowlers उनके पास है और माकरम उनके छठवें का गेंदबाज. So I think it's not going to be easy one. मैं तो बोलता हूँ 80-20, but it's going to be tough. It's going to, I hope the wicket plays well. It'll be good cricket. I want a good cricket. Yes. And I want India to win. You know, cricket pure होना चाहिए India. You know, बिल्कुल. आपको भी मौका मिलेगा टीवी पे बोलने के लिए. Absolutely. Cricket for me, Rohit and everybody, all cricketers are my family. Correct. I always believe that cricketers, कुछ भी हो उनको, we should always support cricketers. They are family. You know. Correct. Let's hope there is a full game and it's great cricket.
and Bharat wins. और जीत के बाद फिर आपसे बात करेंगे. That's what we look forward to. Kiran More, always a pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you so much. On that note, ladies and gentlemen, keep cheering.